Good morning, Anmol. Yes, Anmol and Ayushi, good morning. Good morning, ma'am. Chalo. We had done parts of the leaf yesterday. I think we were there when we stopped. Let me show it to you. See, this is what we did yesterday. Okay, we had started with the leaf. We said parts of a leaf. Let me go back from here. We talked about the stem, node, internode, petiole, buds, midrib, vein, veinlets, and what is this arrangement known as acropetal arrangement. This was the last thing we did, 3 main parts of a leaf. We described the leaf base, this part, leaf base. We talked about stipules. We had also talked about pulvinus, touch me not when we talked about. Then we did petiole, yes, pulling effect, and then the lamina. In lamina, we said this is the midrib. Then we have veins, and then we've got veinlets also. This part is okay. We are going to start with venation today. Venation is also included as a practical for you, so be careful. We know what are veins now in a leaf. Everybody knows what are veins. Okay, tell me, this is vein or these side ones are veins? These are veins, yes. What is Yes, this, the one in the center? midrib. Midrib. Okay. So don't think about midrib, just the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina. We all know what are veins and veinlets. This is a vein, and these small lines which you can see here, sub branches of veins, they are known as veinlets. So how veins and veinlets are arranged in a leaf, this is what we call as venation. There are two types of venation. Reticulate venation, this kinds you can see on your screen. I'll be going into details. And this is parallel venation. See the veins, they're long, parallel to each other. Let me go back to details. Look at this. This is reticulate venation. If you see very carefully, it is something like this. A network is there of veinlets. If these are what? These ones are veins. These ones. And दोनों veins के बीच में ये जो सारा network दिख रहा है ये veinlets है. So veinlets से form a network, irregular है, कोई pattern नहीं है. This is reticulate venation. This you will find in dicots. Come this side now. अगर इसको अंदर से देखेंगे ठीक से देखिए lines हैं like this. Veins, they run parallel to each other within the lamina. This is what we call as parallel venation. So ये network वाला जो leaf हो गया, ये dicots में मिलेगा, and this is reticulate venation. And यहाँ पे जो veins हैं, there is one small difference which you should remember in both of them, बेटा. इसमें veinlets हैं, ये वाला जो है, reticulate में. Veinlets network बना रहे हैं. And इसमें veins हैं, these are not veinlets, these are veins. So this is one small difference you should be careful about. Veins तो ये वाली है, ये वाली. Yellow जो दिख रही है. ये बीच में veinlets है. So when veinlets form a network, this is reticulate venation. It's found in dicots. And here the veins are parallel to each other, found in monocots. And this is which kind of venation? Parallel venation. The types of leaves. We've got two types of leaves. Simple leaf and compound leaves. Compound leaves are again of two types, pinnately compound and palmately compound. I'll come to that also. But first, simple leaf. ये देखो बेटा leaf. ये जो लैमिना है ना ये पूरा का पूरा कंप्लीट है. ये बाउंड्री देखो ये पूरा का पूरा. Is entire or when in size the incisions do not touch the midrib. ये जो cuts है ना साइड में इनको बोलते हैं incisions. ठीक है बच्चे ध्यान से देखो. यहाँ तो लैमिना पूरा का पूरा entire है, cuts है ही नहीं. The cuts are known as incisions. Please remember what are these cuts called? Incision. तो सिंपल लीफ ऐसी होती है जिसमें या तो कट है ही नहीं,
और अगर हैं तो बहुत छोटे छोटे बाहर की तरफ हैं, इतने डीप कट्स नहीं है that they reach the midrib. Such kind of a leaf is known as a simple leaf. What is this leaf called? Simple leaf. Simple leaf. Please remember वो जो साइड में कट्स होते हैं बाउंड्रीज पे उन्हें इंसेशंस कहते हैं. Okay, we will not use the word cuts, we'll use the word incisions. तो simple leaf में कोई डिजाइन नहीं है, incisions normally नहीं होते हैं. And even if it is there, these small cuts or incisions are there. तो बहुत छोटे छोटे हैं, बाहर की तरफ है. देखिए ये यहाँ पे है इंसेशन और ये आपका मिडरिब है. ये इंसेशन मिडरिब को टच नहीं करते. Such kind of a leaf is known as a simple leaf. Now come to compound leaf. Incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets. Incisions are so deep that they reach up to the midrib. तो जब मिडरिब तक पहुंच जाएंगे बेटा इंसेशंस, तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत एक लीफ नहीं है, छोटे छोटे क्या बोलते हैं फिर हम इनको, वी कॉल देम एज लीफलेट्स. व्हाट आर दीस कॉल्ड एज? लीफलेट्स. Leaflet. A bud is seen in the axial of petiole in simple and compound leaves, but not in the axial of leaflets of a compound leaf. Normally, अगर आप simple and compound leaf देखोगे ये वाली, तो यहाँ पे आपको बड दिखाई दे रहा होगा. सिंपल लीफ में भी बड है यहाँ पे, और यहाँ पे कंपाउंड लीफ में भी बड है. ये तो लीफ है बेटा, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीव्स. इसमें आप देखो दोनों में क्या दिख रहा है, बड दिख रहे हैं. बट यहाँ पे देखो, अगर लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स यहाँ पे, इनके एक्सिल में आपको क्या नहीं दिखेंगे, बड्स नहीं दिखेंगे. अगर लीफलेट्स बन गए छोटे छोटे पत्ते, then you will not find the buds. Compound leaves are again of two types, pinnately compound and palmately compound leaves. क्या डिफरेंस है इसमें? छोटे छोटे लीफलेट्स हैं बेटा, ये सारे के सारे लीफलेट्स हमने इनको क्यों बोल दिया, बिकॉज इनका जो इंसेशन था वो मिडरिब तक आ गया है. सो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस. ये देखिए ये आपका बीच का जो एक्सिस है ये रैकिस. व्हाट इज दिस एक्सिस कॉल्ड? इसको देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये नीम को देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसके इंसेशन जो है बहुत डीप होते हैं, जो हम लोग इसको लीफलेट्स बोल देंगे. वी विल नॉट कॉल इट एज अ लीफ. इनके कट्स मिडरिब तक जा रहे हैं तो इसको हम लीफ नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको लीफलेट बोल देंगे. और ये जो कॉमन एक्सिस है बीच में जिसपे सारे लीफलेट्स हैं, दिस इज नोन एज रैकिस. और यही हमारी मिडरिब है. दिस इज नॉट अ स्टेम, दिस इज नॉट अ ब्रांच. व्हाट इज दिस? दिस इज द मिडरिब. बिकॉज आई टोल्ड यू इंसेशंस कहाँ तक पहुंच जाते हैं, मिडरिब तक पहुंच जाते हैं. सो रिमेम्बर ये हमारा मिडरिब है. ये बहुत सारी एक पूरी लीफ थी, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये हमारा मिडरिब था और ये यहाँ से देखना, कर्सर देखना, ये पूरी एक हमारी बड़ी लीफ थी. ठीक है, अब उस लीफ में इंसेशन इतने डीप हो गए कि वो मिडरिब तक पहुंच गए, तो ये कट गया एक तरह से, लीफ के पार्ट्स बन गए, कटिंग्स हो गए लीफ के अंदर ही. दैट इज व्हाई विद देयर स्मॉल पार्ट्स ऑफ द लीफ वी कॉल देम एज लीफलेट्स. और सारे के सारे लीफलेट्स एक मिडरिब पे ही सिचुएटेड है. दिस मिडरिब इन सच अ केस इज कॉल्ड रैकस and such a leaf is known as pinnately compound leaf. The example is neem. आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, ये ब्रांच नहीं है, याद रखिए बेटा, ये ब्रांच नहीं है, ये क्या है, ये मिडरिब है. तो मिडरिब के आसपास लीफ होती है, इसको ऐसे देखो, ये है आपका मिडरिब. यहाँ से समझिए, इसी में समझने की कोशिश करते हैं. दिस वाज योर मिडरिब. ये पूरा का पूरा लीफ था. सपोजिंग यहाँ पे एक इंसेशन आ गया, बहुत डीप इंसेशन है जो मिडरिब तक आ गया, तो यहाँ पे कट गया लीफ, एक पार्ट लीफ का ये कट के अलग हो गया, ये दोनों वेन्स के बीच में एक और पार्ट कट गया, फिर एक और कट गया, एक और कट गया. तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो एक बड़ी लीफ के बन गए, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज लीफलेट्स. व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल देम एज? लीफलेट्स. और ये हमारा मिडरिब है. दिस इज नोन एज रैकिस. ये देखो, ये भी है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट. ये यहाँ पे एक पॉइंट पे ही सारे लीफलेट्स अटैच हो जाते हैं. एंड वो पॉइंट कहाँ होता है? टिप ऑफ द petiole. This point is situated at the tip of the petiole.
Such kind of leaves, for example, silk cotton, you will find they are known as palmately compound leaves. So you'll have to look for such kind of leaves when you go to school. Venation describe करना होता है and देखना है if a leaf is given to you whether it is simple or it is compound, and if it is compound then it is pinnately compound or it is palmately compound. So this is a practical that you have in venation. एक तो you'll have to identify, look for leaves which have reticulate venation, look for leaves which have parallel venation. फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करिए, देखिए ये कट्स दिख रहे हैं बेटा आपको, ये देखिए ये कट होने के बाद ये एक छोटी सी पत्ती अलग लग रही है, ये लीफलेट बन जाएगा कट होने के बाद. So these are simple leaves. Lamina is entire, or even if there are incisions, they do not touch the midrib. Compound leaf में क्या हो रहा है बेटा? Incisions are so deep that they reach up to the midrib. तो छोटी छोटी leaves बन जाती हैं, leaflets. ये हमारा midrib in such a case is called what? Rachis. ये pinnately compound है, बीच में midrib है, दोनों तरफ छोटे छोटे leaflets है. This is pinnately compound. एक ही पॉइंट से सारे leaflets emerge हो गए, then this is what compound? Palmately compound. What is phyllotaxy? Arrangement of leaves on the stem or a branch is called phyllotaxy. How the leaves are arranged on the stem, this is called phyllotaxy. There are three types. One is alternate, then it is opposite, and this is walled. Let's understand alternate. ये alternate है बेटा, बहुत easy है. एक सिंगल लीफ निकला राइट साइड पे, तो अगला लेफ्ट पे निकलेगा, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में. So a single leaf arises at each node in alternate manner. Such kind of a taxi is known as phyllotaxy. Best examples are China rose, mustard, sunflower. So at a time एक ही leaf निकलेगी बस, and alternate arrangement रहेगा. Alternate arrangement मतलब क्या रहेगा? देखो, एक इधर निकलेगा राइट में तो दूसरा लेफ्ट में ग्रो करेगा. ये देखिए बच्चा, ये ऑल्टरनेट है, ये है, फिर ऊपर वाला इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर. सी दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज नोन एज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. ये देखिए बेटा, दिस इज ऑपोजिट. एट एवरी नोड टू लीव्स विल अराइज, एक लेफ्ट में एक राइट में, बोथ द साइड्स पे. कोई भी नोड देख लीजिए, ये नोड देख लीजिए, ये नोड देख लीजिए. On every node we have one pair of leaves opposite to each other. Guava is the best example of this opposite phyllotaxy. This is walled phyllotaxy. From one node, more than two leaves arise. अगर ये node ले ले तो 1, 2, 3, 4, 5. इस node पे देखिए 5 leaves are arising. More than two leaves arise. They look like a wall. Flowers में जैसे walls होते हैं, calyx, corolla, something like that. This is known as walled phyllotaxy. Example is Alstonia. So let me have it with you. Pehchaniye beta, let me hide this. This is which kind of an arrangement? First one. This Alternate. like a Alternate. What about this? Opposite. Opposite. See over here, more than one leaf is arising from one point. More than two leaves, sorry. So Walled. Wall. this is walled. Very good. So let me know if you want me to do anything with you again before I go further. We did venation. There are two types of venation we talked about: reticulate venation and parallel venation. Reticulate में venlets form a network. यहाँ पे veins parallel हैं. Simple leaves and compound leaves. Simple leaf में कोई incisions नहीं है, कोई cuts नहीं है, और अगर हैं भी तो they do not reach the midrib. Compound leaves में we have incisions. Incisions are so deep that they reach the midrib, and छोटे छोटे leaflets, एक बड़ी leaf में से छोटे छोटे leaflets बन गए. And midrib in such a case is called Rachis. Rachis. good. Here also we've got two kinds of leaf, pinnately compound and palmately compound. एक common axis है बीच में, इधर 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 leaflets हैं, this is pinnately compound. And एक ही point से, okay, सारे leaflets निकल गए, then this is palmately compound. Then arrangement of leaves is called phyllotaxy. We just talked about this. This is alternate.
दिस इज ऑपोजिट। देखिए बेटा, एक ही नोड से दो लीव्स एक टाइम पे निकलेंगे हमेशा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और ये हो गया आपका वॉल्ट। एक ही पॉइंट से मोर देन टू लीव्स आर राइजिंग। Modification of leaves. Leaves are modified to form functions other than photosynthesis. We have already done this tendrils wala in modification of which part of the plant? Tendrils किसमें करा था? किस प्लांट का मॉडिफिकेशन, मतलब किस पार्ट का मॉडिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं? टेंड्रिल्स। स्टेम्स में भी तो था बेटा, यस और नो? Yes, ma'am. So stems also form tendrils, leaves also modify and form tendrils for climbing. For example, in peas leaves में से tendrils, leaves modify होकर के tendrils बना रहे हैं बच्चा. There the stem was having tendrils modification. Here it is leaves, peas, spines. ये भी हम कर चुके हैं. See over this. These are spines, fleshy leaves to store food. For example, onion. Okay, onion is what? Basically, they're leaves only. They become fleshy because they store food. So we have only 3 modifications. Stems में तो बहुत सारा modifications we had. Leaves we have only 3 modifications. One is tendrils, second is spines, and the third is fleshy leaves. In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and they are short-lived. ये पहला वाला plant देखिए, acacia ये है. Okay, leaves बहुत छोटे हैं, lifespan भी बहुत short है. The petioles they expand, become green and synthesize food. अब इतनी छोटी लीफ में काम नहीं चलता बेटा. ये है लीव्स, ये वाले, ये देखो, ये वाले नॉर्मल लीव्स है जहाँ पे कर्सर है. देखिए कितनी छोटी है ये लीव्स. Can you see the leaves are so small? Acacia plant this is. So क्या होता है, फोटोसिंथेसिस सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, इतनी छोटे छोटे लीव्स नहीं. ये वाले भी देखिए. तो ये पिटियोल है. पिटियोल एक्सपैंड कर जाएगा, इट बिकम्स ग्रीन and photosynthesis start kar deta hai. So this is a modification again. Here the petiole is getting modified to become a leaf-like structure so that it can photosynthesize. ये normal leaves हैं बेटा, देखिए कितने छोटे छोटे leaves हैं. This is Australian acacia. Leaves are very small and short-lived also. So plant का काम नहीं चल पाता है. So petioles बड़े हो गए हैं. Petioles expand होके they become green. And what function they start doing? They start performing photosynthesis. एक और देखो. This I think you have done. ये picture plant है. This you can identify. बताओ कौन सा plant है ये? Venus flytrap. Venus flytrap. Yes, very good. You can identify. So leaves of some insectivorous plants like pitcher, Venus flytrap are also modified leaves. ये देखिए pitcher shape ले लेता है. These are also modified leaves. So they, what do they eat? They eat insects, correct? Yes, ma'am. I think I've already discussed with you once as far as I remember, but still let me ask you again. अगर आप ध्यान से देखिए, ये ग्रीन है बेटा, ये भी ग्रीन है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? Insectivorous plants, can they photosynthesize or not? Can they prepare their food? Tell me. Insectivorous plants, can they prepare their food or not? अच्छा, yes no में तो आंसर दे सकते हैं. Tell me. Yes, they can photosynthesize. See, they are green now. This is also green. This is also green. They can photosynthesize. Then why do they eat insects? Because they grow in nitrogen deficient area. Excellent, beta. These plants generally grow in those areas where there's a deficiency of nitrogen in the soil. So that is why, to fulfill their nitrogen deficiency, they eat insects. Because in the body of insects, we have proteins, amino group, nitrogen hai. So that is why they eat. Excellent. So ye yaad rakhiyega, these are small general awareness things. Yes, they can photosynthesize, but they still eat insects. Is it okay for us?
Everybody is okay with these two special modifications. What was this plant? Australian acacia. Leaves are very, very Short lived. तो कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है ये लीफ बनाता है? Petiole. Yes, beta, it is petiole. Then we talked about these modifications. 3 kinds of phyllotaxy: alternate, opposite, and walled. We know what is venation. Arrangement of veins is what we call as venation. Let's move on to the flower. Flower is what? It's a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Flower is what, beta? It's a part of the shoot system or root system of the plant. Shoot system. Food system. Very good. There is a little bit modification. The meristematic tissue of the shoot changes into floral meristem. That means it forms flowers. Internodes do not elongate and the axis gets condensed. Here what happens is beta, internodes they do not get elongated. ज़्यादा difference नहीं रहता है. और जो axis है हमारा वो condense हो जाता है. Condense मतलब बहुत ज़्यादा spread नहीं करता है. ठीक है? Constrict हो जाता है. Apex produces various floral appendages. जो tip है यहाँ पे ऊपर floral appendages आ जाते हैं. Leaves की जगह पे node से ये निकलने लगते हैं. ये मॉडिफिकेशन है हमारा फ्लोरल अपेंडेजेस. देखो पहले ये बताते हैं. फ्लावर को देखो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा. हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ प्लांट. कैसे लीव्स अरेंज होते हैं? व्हाट वाज दैट कॉल्ड? अभी करा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. वी डिड 3 टाइप्स. व्हाट इज दैट कॉल्ड? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ प्लांट. Phyllotaxy. Very good, very good. It is called phyllotaxy. So similarly, arrangement of flowers on an axis is called inflorescence. There is a difference between venation, phyllotaxy, and inflorescence. Arrangement of veins on a leaf is called? Venation. Very good. Arrangement of leaves on a stem is called? Phyllotaxy. Phyllotaxy. Bolo beta, hardly 2 children. And arrangement of flowers on the axis is called? What is this called? Inflorescence. Inflorescence. Okay, now let me explain. There are 2 types of inflorescence, racemose and cymose. देखो रेसमॉस ऐसा होता है ये. ठीक है. एक्रोपेटल तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ये देखो मेन एक्सिस ग्रो करता ही रहता है. मतलब हाइट ट्री की प्लांट की बढ़ती ही रहेगी. मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. फ्लावर्स लेटरली ग्रो करते रहते हैं. इधर को ग्रो करते हैं, इधर को ग्रो करते हैं, लेटरली ग्रो करते हैं. इन व्हाट सक्सेशन? Acropetal succession. वेरी गुड. एक्रोपेटल सक्सेशन. देखो बच्चा फिर से समझो ये रेसमोस में क्या होता है. आपका ये प्लांट है, इसका ये मेन एक्सिस है, ये तो ग्रो करता रहेगा. ऐसा नहीं है कि फ्लावर्स आने के बाद ग्रोथ रुक जाएगी. नो, ये ग्रो करता जाएगा. ये ग्रो करता जाएगा. एंड फ्लावर्स कैसे अराइज करेंगे? एक्रोपेटल सक्सेशन में. सबसे पहले नीचे फ्लावर्स आएंगे, फिर ऊपर. जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ऊपर फ्लावर्स आते रहेंगे. सो ओल्डर फ्लावर्स नीचे, यंग वाले ऊपर. सच काइंड ऑफ अ सक्सेशन इज नोन एज Acropetal succession. Acropetal succession. एंड हाइट जो है वो बढ़ती रहेगी. बस मेन चीज आपको याद रखनी है कि ओल्ड फ्लावर्स नीचे, न्यू फ्लावर्स ऊपर. इसका बिल्कुल उल्टा साइमोस में होता है. मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. ये मेन एक्सिस है, ये अब बढ़ेगा ही नहीं. अगर यहाँ पे मेन एक्सिस पे फ्लावर आ गया, यहाँ पे फ्लावर आ गया तो ये टर्मिनेट कर जाएगा. मतलब अब ये ग्रो नहीं करेगा मेन एक्सिस. तो ऑब्वियसली द ग्रोथ इज लिमिटेड. And the flowers are born in a basipetal manner. Basipetal उल्टा होता है. कैसा होता है बेटा? देखो सबसे पहले इस एक्सिस ने ग्रो करा, ये फ्लावर आया तो ग्रोथ रुक गई. पहला तो इसका मतलब सबसे पहले तो यही फ्लावर ग्रो आया ना बेटा.
फर्स्ट फ्लावर जो ग्रो करा वो यही वाला होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेन एक्सिस ही सबसे पहले एक फ्लावर देगा एंड इसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो ये फर्स्ट फ्लावर है हमारा, सबसे पहले यही फ्लावर आएगा। उसके बाद आप देखो नीचे हम उल्टा जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पे फ्लावर्स आ रहे हैं। यानी ओल्ड फ्लावर तो ऊपर है और न्यू फ्लावर्स कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे ग्रो कर रहे हैं। Such kind of a succession or order is known as basipetal order. What is it called? Basipetal. order. So in basipetal old flower, ये हमारा old flower ऊपर है। जैसे ही ये फ्लावर आगे आपने देखा ये ग्रोथ रुक गई है स्टेम की, ये आगे नहीं जाएगा, ये रुक गया है यहाँ पे। सबसे पहले यही फ्लावर निकलेगा, ग्रोथ रुक जाएगी और फिर नीचे साइड में से ब्रांचेस निकलेंगे जिसमें से फ्लावर्स आते रहेंगे। This kind of order is known as basipetal order. So ये inflorescence है। Inflorescence is of two types, racemose and cymose. Two things to remember. Racemose में मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करता रहेगा, बट साइमोस में जैसे ही फ्लावर आ जाएगा, फ्लावर की ग्रोथ आ जाएगी, मेन एक्सिस पे ग्रोथ रुक जाएगी। सेकंड बेटा, ये ग्रो करता जा रहा है, साइड में फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं। यानी ओल्ड फ्लावर्स साइज देखिए ये बड़े हैं, ओल्ड फ्लावर्स नीचे और सबसे छोटे यंग फ्लावर्स सबसे ऊपर। साइज से आप देख सकते हैं, दीज आर बिग वंस, ये अभी अभी निकले हैं। साइमोस मेन एक्सिस टर्मिनेट कर गया यहाँ पे, जैसे ही एक फ्लावर आया एक्सिस की ग्रोथ रुक जाएगी, तो हाइट तो इससे ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं। तो जो भी प्लांट्स पे फ्लावर्स आएंगे वो नीचे ही निकलेंगे, नीचे ब्रांचेस। देखो ये फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर, अब इसकी ग्रोथ रुक गई, अब ये और बड़ा नहीं होगा। तो इतना ही एक्सेस है हमारे पास। अब इस एक्सेस में से यहाँ पे से इसके बिल्कुल नीचे फ्लावर्स निकलेंगे, नीचे की तरफ जो फ्लावर की ग्रोथ होगी, देखिए ये सबसे यंग फ्लावर है और ये ओल्ड फ्लावर्स है। तो सच काइंड बेस, क्योंकि हम नीचे की तरफ फ्लावर ग्रोथ हो रही है, बेस की तरफ हो रही है, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। व्हाट इज दिस ऑर्डर कॉल्ड? Basipetal order. Yes बेटा, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बेस। फ्लावर्स जो न्यू ग्रो करेंगे वो टुवर्ड्स द बेस ग्रो करेंगे, सो दिस इज बेसिपिटल ऑर्डर। Flower is what? It is a reproductive unit in the angiosperms. We know flower is a reproductive part of a plant. This is meant for sexual reproduction. Flower में क्या होता है, ये डंडी है, ये स्टॉक जिसको हम पेडिसल बोलते हैं। ओके, ये क्या बोलते हैं इसको बच्चा? दिस स्टॉक इज नोन एज पेडिसल। Pedicel. वेरी गुड। इसका जो एंड होता है, ये देखिए, ये पेडिसल से ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा सा स्वेल्ड अप है। You see this area, this is swelled up. This is known as receptacle or this is known as thalamus. Same thing है बेटा। नीचे से ऊपर स्टडी करेंगे, you should be able to identify. ये हमारा जो स्टॉक है, ये जो डंडी है जिससे कनेक्टेड रहता है फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। पेडिसल के ऊपर ये जो स्वेल्ड अप पार्ट है, दिस इज नोन एज रिसेप्टिकल और Thalamus. Thalamus. very good, this is the thalamus. Now we have reduced leaves. इधर चलते हैं, ये छोटे छोटे लीव्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। अच्छा आप पहचानिएगा, ये हमारा क्या है, ये देखिए ये मेन स्टेम से कनेक्टेड है, ये फ्लावर इससे। तो ये क्या हो गया हमारा, अभी इधर आइडेंटिफाई किया था, ये जिससे कनेक्टेड होता है फ्लावर, ये मेन स्टेम है, तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है। सो व्हाट इज दिस? Pedicel. Pedicel. वेरी Pedicel. गुड। ये इसका टॉप पार्ट हो गया, थोड़ा स्वेल्ड अप पार्ट। व्हाट इज दिस पार्ट? Thalamus. Receptacle. रिसेप्टिकल। ये देखिए स्वेल्ड अप है ये पार्ट। ये देखो ध्यान से देखना, ये हमारा पेडिसल है ये पूरा, और ये जो पार्ट है स्वेल्ड अप वाला, ये दिस इज योर रिसेप्टिकल। अब रिसेप्टिकल के बेस पे, ये रिसेप्टिकल है बेटा, देखो ये स्वेल्ड अप पोर्शन दिख रहा है, ये वाला ये रिसेप्टिकल है। इसके बेस पे यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीव्स। दीज आर नोन एज ब्रैक्ट्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज? Bracts. ये देखो बच्चा, दीज आर नोन एज ब्रैक्ट्स। बट हर फ्लावर में ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं। Those flowers which have bracts are called bracteate, and those which do not have bracts, they are called ebracteate. यहाँ पे ब्रैक्ट दिख रहे, देखिए
ये हमारा पेडिसल था, ये रिसेप्टिकल है। इफ यू सी रिसेप्टिकल का बेस तो ये हो गया ना बच्चा, यहाँ पे तो कोई ब्रैक्ट्स नहीं दिख रहे हैं हमें। सो दिस इज ब्रैक्टिएट और ईब्रैक्टिएट फ्लावर। Ebracteate. Let us understand the location of bracts again. This is the ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से जो अरेंज कनेक्टेड है फ्लावर वो पेडिसल है, पेडिसल का टिप सोलन है, दैट इज रिसेप्टिकल थैलेमस. So now tell me, this is the main stem. So what is this? This one? Pedicel. Pedicel. This is the tip of the pedicel, swollen tip. What is it? Receptacle. Receptacle. See there, children, there's a lot of confusion in identification of sepals and bracts because both of them are leaf-like structures. The only thing that you can keep in mind is, इसको याद रखो बस, ये जो swollen part है ये thalamus. Thalamus के नीचे bracts होंगे and thalamus के ऊपर sepals होते हैं. Both of them look similar. If you see, these are sepals, ये leaves, ये दोनों, and these are bracts. They look quite similar because both of them are small green leaves. So only understand that base, इसके नीचे, at the base of the thalamus or the base of the receptacle, you will have bracts. And इसके ऊपर जो leaves दिख रही है छोटी छोटी, they are going to be sepals. अब ये बताइए, इसका ये sepal होगा या ये bract है? Sepal. This is sepal because this is receptacle and it is growing above the receptacle. अगर bract होते तो वो यहाँ पे होते, at the base of the receptacle. Fine, children, should we proceed now? Do you know the difference between bracteate and ebracteate flowers? Yes. Yes, ma'am. ma'am. You should be able to identify when a flower is given to you in the school. You look for what? You will look for pedicel. हैंड में पेडिसल होल्ड करिएगा, टिप पे जाके एक swollen part दिख जाता है. You will immediately get to know that yes, this is a thalamus or this is a receptacle. And then receptacle के नीचे अगर है छोटे छोटे leaves तो वो bracts है. That means your flowers are bracteate, and if they're not there, then they're ebracteate flowers. A typical flower has 4 kind of walls: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Androecium, gynoecium are the reproductive organs, and calyx and corolla, they are known as the accessory organs. Okay, they are accessory organs. Before I move on to the detail of the flower, I think we know about it, but फिर भी कर लेते हैं एक बार. ये क्या चीज है? Not labeled, but you know about it. Pedicel. Yes, this is pedicel. The tip of the pedicel, the swollen part. What is this? Receptacle or thalamus. Receptacle or thalamus. And on the tip you have these. What are these? Sepal. अच्छा बताइए, this is bracteate flower or ebracteate flower? The one I'm showing you now. Ebracteate. Ebracteate. Very good. It is ebracteate because receptacle के नीचे there are no small leaves. So these are sepals. These colored structures are what we call as petals. You already know about them. Now let's talk about the gynoecium. This is stigma, sticky area, style, जिसमें pollen tube grow करेगा, and this is the ovary. Ovary के अंदर these are ovules. So all these are the female reproductive structures. Everything includes together carpel, or we call it as gynoecium. Come to the male one. This is simple. This stalk-like structure, this is called filament, and इसके tip पे ये swollen part है. This is called as anther. I'll be going into details now. Let's do this. In some flowers, like lily, the calyx and corolla are not distinct. This is called perianth. What is this called? This is called as perianth. Let us understand this again. Calyx मतलब sepals. ये देखो बेटा, ये sepals जो है इसको calyx बोलते हैं. The collection of all sepals together is known as calyx, and all petals together are known as what? What are the petals known as? Corolla. Corolla. What are they called? Corolla. अच्छा, look over here. Sepals अलग है, petals बिल्कुल अलग है एक दूसरे से. That means calyx and corolla distinct है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. But in some flowers, let me show you this, like lily. यहाँ पे देखो बेटा, ये जो sepals हैं जिसको हम calyx बोलते हैं, ये जो petals हैं corolla, ये अलग अलग नहीं है. They are not distinct, they are fused with each other. अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं दिख जाएगा तो इसको कलेक्टिवली भी कॉल इट एज पेरियंथ. व्हाट इज इट कॉल्ड?
Perianth. Yes. Is this perianth? Can I call this No. flower as perianth? We cannot call this as perianth because sepals बिल्कुल अलग है, petals अलग है. अगर sepals और petals fused हैं एक दूसरे में, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, calyx and corolla, they're fused with each other, then we use the word perianth. If a flower has both male and female parts, androecium and gynoecium, then we're going to call it as bisexual. And if it has only one, then we're going to call it as unisexual. ये वाला बताइए bisexual है कि unisexual है? Bisexual. 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 Did you understand this perianth? Is it okay? Bisexual, unisexual तो पता ही Yes, है. ma'am. You've understood what is perianth? चलो, then it's fine. Let's move further. Now, based on the symmetry, flowers are of three types: actinomorphic, zygomorphic, and asymmetric. कुछ कुछ समझिए इसको. Actinomorphic, any radii कट कर रहे हैं. Zygomorphic center, asymmetric तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे. Look at actinomorphic. ये देखिए बेटा. Flower can be divided into two equal halves in any radial plane passing through the center. आप किसी भी रेडियल प्लेन में कट कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, किसी भी एक्सिस के अलोंग काट दो, you will get two equal halves. Such a flower has a radial symmetry and the flower is known as actinomorphic. What is it called? Actinomorphic. Actinomorphic. देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं. दतूरा, चिली, कहीं से भी काट दो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, किसी भी एक्सिस के अलोंग कट करो, you will get two equal halves. So such kind of flowers are called actinomorphic and the symmetry is called radial symmetry because along every radius आप इसको कट कर सकते हो. Next है हमारे zygomorphic flowers. You can cut it into two similar halves only in one plane, vertical plane. सिर्फ ऐसे ही कट करोगे तो equal आएंगे. अगर आप ऐसे कट करेंगे तो equal halves नहीं आएंगे. You can cut it only in one vertical plane, then you will get equal halves. ये वाला प्लांट देखिए, पी का बहुत easy है. इसको मैं ऐसे कट करूंगी तो टू इक्वल हाफ्स आएंगे, लेकिन अगर ऐसे कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे. रेडियस के अलोंग कट करेंगे तो नहीं आएंगे. So such kind of flowers are known as zygomorphic and we can cut it only across one symmetry. So this is bilateral symmetry. Last है हमारे irregular और asymmetric flowers. Flowers cannot be divided into two similar halves by any vertical plane. कैसे ही काट लीजिए इसको आप. ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल नहीं आएगा, ऐसे कैसे भी प्लेन में काटिए, you will never get equal halves. Such kind of flowers, they are known as asymmetric flowers or they are known as irregular flowers. So on the basis of symmetry, we have three kinds of flowers. Okay, ये कौन सा है? Actinomorphic. Yes, along any radial plane you cut like this, you cut like this. Anyways, you will get two equal halves. Here you can cut it only along one vertical plane, you will get equal halves. बाकी में अगर आप कट करेंगे तो equal halves नहीं आएंगे. What are these flowers known as? Zygomorphic. And these are? Asymmetric. Asymmetric. Okay, name the symmetry. Actinomorphic flowers have what symmetry? Radial symmetry. Radial symmetry. And zygomorphic flowers have? Bilateral symmetry. Bilateral symmetry. And asymmetric flowers have no symmetry. They don't have only any symmetry. I think this is sufficient for today. We have a class after this also, another period. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Take a break. We just have 30-40 seconds. You need to have a break. You have a class. Okay, bacha, let's meet later then in the next period. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, my dear children. Bye. God bless.